Hello dear students. Today we are going to revise the chapter of animal tissue. Alright, and for this revision we are going to use the state board textbook. तो आप सब लोगों को अपना state board textbook अपने साथ रखना है. Alright, as we go on revising you have to mark all the important points in the textbook. I will show you how. सारे diagrams को आपको label करना है. So you are going to do that with me by understanding the chapter. Okay, एक एक चीज को समझ के उसको mark करना है. Alright, so we will be seeing the tissues today. That is the tissues present in the body. Such a huge organism but has only 4 principal type of tissues. Alright, इतने बड़े body में type of tissues सिर्फ 4 रहते हैं. Very important MCQ. One is the epithelium, second connective, third nervous and fourth muscular tissue. We are going to see about all of these one by one. Today we will start with the epithelium. Alright, so before we start, let us see what a tissue is. Tissue is a group of cells having same embryonic origin, structure and function. Group of cells जिसमें same structure रहेगा, same function रहेगा, same embryonic origin रहेगा, will form a tissue. Alright, and these tissues will be arranged in an orderly manner to form an organ. ये organs जब एक दूसरे के साथ काम करेंगे तो organ system बनाएंगे. And these organ systems together, when are combined and perform complex functions, they form an organism. So this structural hierarchy from the cells to the tissues, to the organs, to the organ system and to the body is important. ये आपको समझना है कि cells which are working together are structurally similar. They are going to form tissues. Tissues साथ में combine करके organ बनाएंगे. Various organs together, जैसे आपने digestive system देखा है, various organs of the system will combine to form the digestive system. Various systems together in the human body will form the organism. So this structural hierarchy is important. Now there can be 2 types of cells in the human body, that are somatic cells and germ cells. Soma means body. So somatic cells will be the cells which will be present in the body. Germ cells will be the cells which will be present in the reproductive system. Very important MCQ again. These germ cells only have the capability to divide meiotically and produce haploid gametes. ये हम देखेंगे germinal epithelium में germ cells को. So now what is histology? The study of tissue is histology. The study of the structure and arrangement of the tissue is called histology. There are 4 types of tissues we have seen: epithelial, connective, muscular and nervous. Alright, and father of histology is Marie Francois Xavier Bichet. He is the father of histology. Because of his renowned work on the tissue, he is an anatomist and pathologist. ये सब आप mark करते जाओ आपके textbook में with me, alright? So to begin with, epithelium. Epi means above, thelia means layer of cells. एक किसी structure के ऊपर जो cells रहेंगे, उसको epithelium बोलेंगे. और ये नीचे का structure जिसके ऊपर ये cells हैं, ये होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन. ऑलराइट, एक बिल्डिंग देखी है आपने, कहां से चालू होती है? बेस से. बेस के बाद यू हैव द ग्राउंड फ्लोर. ओके, यू हैव द फर्स्ट फ्लोर, यू हैव द सेकेंड फ्लोर. सो लेयर ऑफ सेल्स ऑन दिस बेसमेंट मेम्ब्रेन मीन्स एपिथेलियम. नाउ डिपेंडिंग ऑन कितनी लेयर्स है, दिस कैन बी डिवाइडेड इनटू सिंपल एपिथेलियम where only one layer of cell will be present, whereas compound epithelium where multiple number of layers will be present or 2 or more layers will be present, usko bolenge compound epithelium. And depending on the shape of the cells, अब ये जो cells हैं जो simple या compound रहेंगे, उनकी shape के हिसाब से they can be divided into polygonal, cuboidal or columnar. We will see these shapes of the epithelium and we will see the simple and compound epithelium.
इसके पहले ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन रहती है वो नॉन सेल्यूलर रहती है. इट्स जस्ट अ बेस जिसके ऊपर सेल्स हैं. सो आपको ये याद रखना है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन इज गोइंग टू बी नॉन सेल्यूलर. एंड ये जो सेल्स हैं एपिथेलियम के बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर, इनके बीच में बहुत कम इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स रहेगा. They are going to be tightly, compactly packed with each other with very less intercellular matrix. So basement membrane is non-cellular. It is going to provide support to these layer of cells. ये जो layer of cells हैं basement membrane के ऊपर, उनको support देगा basement membrane. Okay, it's going to provide support. It is non-cellular. It is made up of glycoproteins, mucopolysaccharides and collagen fibers. ये उसका composition है and it is secreted by the epithelium from above and by the connective tissue from below. This is the basement membrane. So this you have to remember, it is secreted by epithelium from above, connective tissue from below. It's going to provide support to the cells over here. It is made up of glycoproteins, mucopolysaccharides and collagen fibers, and it is secreted by the epithelium and the connective tissue. So यहाँ पे देख लेते हैं, this is the basement membrane, alright, and these are the epithelial cells. Basement membrane के नीचे होगा connective tissue. Now one very important MCQ, epithelium is not going to have blood vessels. Blood vessels सिर्फ नीचे रहेंगे. Epithelium will be having nerve endings जो उसमें innervate करेगी. See, look here. Nerve endings रहेगी, but blood vessels नहीं रहेंगे in the epithelium. Very important MCQ. So characteristics of epithelial tissues. Cellularity रहेगी, बहुत सारे cells रहेंगे जो अपनी cellularity maintain करेंगे. Specialized contacts रहेंगे. We will be seeing the type of contacts between the cells in the epithelium. Polarity रहेगी, means cell के apical part में, apical means ऊपर वाला, and cell के basal part में जो components हैं वो अपनी polarity maintain करेंगे. apical वाले components basal नहीं आएंगे, basal वाले apical नहीं जाएंगे. It will be supported by connective tissue from below. It will be avascular but innervated. मैंने आपको दिखाया है डायग्राम में. Very important MCQs on all of these. The characteristics of an epithelial tissue. It will be able to regenerate. Means lost cells जो हैं, जो surface cells निकलते जाएंगे, it is going to have the ability to regenerate. ये lining होती है. Epithelium is the lining of body cavities. It can be an external lining, can be an internal lining. ये भी add करो यहाँ पर characteristics में. Alright, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 in your notebook on the characteristics of epithelial tissue. So functions. अब ये एक lining है inner body cavities की भी, external body surface की भी. So ये protection करेगा of the underlying tissues. जिस भी surface के बाहर present है उसको protect करेगा. It is going to secrete when it is going to be present around the glands जो अपने secretions बनाते हैं which are useful for the body. ये secretion का काम करेगा. Absorption का काम करेगा where we have to absorb the nutrients. जैसे हम खाना खाते हैं उसके nutrients absorb करने हैं. So epithelium is going to do the work of this absorption. Diffusion का काम करेगा. High concentration से low concentration में लाएगा molecules को, अपने आप diffusion होगा through the epithelium. Filtration करेगा, जैसे चाय की छन्नी होती है, हम चाय छानते हैं, we are filtering the essential or the required part from it and moving the unrequired part. So it can do the work of filtration also. जैसे हम during the process of urine formation होता है, we don't want essential nutrients to go with the urine. So it's going to filter what is required by the body and it's going to excrete what is not required. Transportation करेगा, एक सेल से दूसरे सेल्स को, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन्स को, ये सारे मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट करेगा. एंड सेंसरी रिसेप्शन. It's going to work in the sense organs. It's going to take the sensory reception and take it to the nervous system. So all these are functions of the epithelium. You can remember it by this mnemonic PASIFs.
which gives all the functions which we have discussed. तो अब जब मैं प्रोटेक्शन बोलूंगी, मैं एब्जॉर्प्शन बोलूंगी, मैं सिक्रीशन बोलूंगी, इन द कंप्लीट लेक्चर यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन बाय प्रोटेक्शन, व्हाट आई मीन बाय एब्जॉर्प्शन, व्हाट आई मीन बाय सिक्रीशन, सेंसेशन, ट्रांसपोर्टेशन, फिल्ट्रेशन. ऑलराइट, ये सारे टर्म्स आपको समझने होंगे. Now to begin with the first epithelium, that is simple epithelium. हमने देखा था one layer of cell है तो simple होगा. Alright, two or more layer of cells है तो compound होगा. Now simple epithelium, तो उसका first type है squamous epithelium, जिसमें जो cells है वो serrated margins रहेगी. They will not have smooth margins and polygonal cells रहेंगे. See like this. They will have serrated margins and this nuclei over here. See this. Alright, and basement membrane पे rested रहेंगे, flat रहेंगे, thin layer रहेगी, okay, polygonal रहेंगे, with serrated margin रहेंगे. These can be compared to eggs in the pan or pav या pavement epithelium भी बोलते हैं इसको. आप फुटपाथ पे चलते हो, साइड में जो रोड के साइड में जो फुटपाथ रहता है उसकी टाइल्स देखी है कभी? ऐसा अपीयरेंस होता है स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यूज का. See the eggs in the pan, you will see that serrated appearance and this egg yolk giving the appearance of the nucleus. So it's going to be these kind of serrated cells, flat cells, okay. Pavement epithelium भी बोलते हैं इसको because of this appearance. Prominent spherical or oval nucleus रहेगा which is present in the center of the cell. ये आपको याद रखना है. Now because it is a very thin layer, इसका principal function diffusion रहता है, but it can also do protection, absorption, transportation, filtration and secretion. It is mostly found in the blood vessels and alveoli of the lungs and in the body cavity, that is in the coelom. Alright, so this is about the squamous epithelial cells. ये आपको एक serrated margin से बनाने हैं, flat बनाने हैं, thin बनाने हैं and centrally placed nucleus. You can remember these terms to draw the diagram or to compare the features in the MCQs. MCQ में आता है squamous epithelial tissue and features दिए हुए रहते हैं. So आप ये diagrams से वो features compare कर सकते हो. Location alveoli of the lungs, blood and lymph vessels, kidney में, glomerulus में, lining of the heart में and in the principal body cavity, that is in the coelom. All these places you will find the squamous epithelial tissue. Coming to the next, that is the cuboidal epithelium. Cube नाम से ही बोलता है length is equal to breadth. Okay, जितनी length है उतनी ही width होगी इन cells की with centrally placed nucleus. तो ये डायग्राम आपके बुक में आपके हैंडराइटिंग से आपको बनाना है. Resting on the basement membrane, this will be the centrally placed nucleus. Length is equal to width. The analogy is ice cube. जैसे ice cubes रहते हैं एक simple वाली ice tray के, not of ice trays which have different shapes. Okay, so it is cuboidal shape with a spherical nucleus at the center. Absorption and secretion इनका मेन काम रहेगा. अगर ये secrete कर रहे हैं means ये pancreatic duct पे, salivary duct पे, इन सब ductal glands की lining पे रहेंगे. अगर इनको absorb करना है तो इनका main function kidneys में होगा, जहां इनको जाने नहीं देने हैं nutrients in the excretory products. They are going to absorb all of them. All right. So this is the cuboidal epithelial tissue. इसका लोकेशन होगा पैनक्रियाटिक डक्ट, सलाइवरी डक्ट, स्वेट ग्लैंड्स हमने देखा है, इन ग्लैंड्स में, इन डक्ट्स में, किडनी में, देन इन द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ द किडनी, लंग्स में रहेगा, एल्वियोलाई में, थायराइड फॉलिकल्स में, ओवेरियन फॉलिक्यूल्स में, वेयर दे आर गोइंग टू सिक्रीट हार्मोन्स. ऑलराइट, exocrine pancreas you have seen, so secretory function again over here, and in the eyes it will be present in iris and retina. आई में आपको ये याद रखना है कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम यहाँ पे रहेगा आइरिस और रेटिना में. द कॉर्निया विच इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द आई, उसमें एक दूसरा एपिथेलियम रहता है. ये मार्क कर लो यहाँ पे एमसीक्यू के लिए. आई में आइरिस और रेटिना में क्यूबॉइडल एपिथेलियम, आई विल टेल यू कॉर्निया जहाँ पे आएगा.
Next is the columnar epithelium. Again, we are under the heading of simple epithelium, means एक ही layer रहेगी on the basement membrane. But these cells, here the length is going to be more than the breadth. It's going to be like a column, okay? And resting on the basement membrane, nucleus is going to be over here, near the basal surface. इसकी न्यूक्लियस सेंटर में नहीं रहेगी. इसको किससे कंपेयर कर सकते हैं? यू कैन कंपेयर इट विद कॉलम्स और यू कैन कंपेयर विद द स्मार्टफोन्स ऑफ टुडे. स्मार्टफोन बड़ा होता है बट सेंटर बटन, मेन बटन कहाँ रहता है? नीचे रहता है, एट द बेसल सरफेस. ओके, सो कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स. अगर ये टॉल पिलर लाइक होते हैं, यू हैव टू मार्क दिस. व्हाई आई एम टेलिंग यू डिफरेंट नेम्स, डिफरेंट एनालॉजीज, बिकॉज ये सब एमसीक्यूज में रहते हैं. आपको कंपेयर करना आना चाहिए इन द एमसीक्यू. ऑलराइट, दे आर नैरो विथ फ्री एंड्स आर, व्हाइल फ्री एंड्स आर ब्रॉड एंड फ्लैट. अब अगर इसके सरफेस पे अंदर बाहर ऐसे होंगे, दीज आर कॉल्ड माइक्रोविलाई. माइक्रोविलाई बोलते हैं इनको. अगर किसी फ्लूइड को एक सरफेस से पास करना है और अगर स्मूथ सरफेस होगा तो इट्स नॉट गोइंग टू बी एब्जॉर्ब्ड ऑन अ मोर सरफेस एरिया. बट अगर अंदर बाहर जाना है फ्लूइड को तो ज्यादा सरफेस एरिया पे एब्जॉर्प्शन कर सकेगा. अंदर जाएगा बाहर आएगा, अंदर जाएगा बाहर आएगा. सो दिस माइक्रोविलाई मे बी प्रेजेंट. ओके, इनका भी फंक्शन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन होगा. They are mostly found in the inner lining of intestine, gallbladder, gastric glands, intestinal glands. You have seen all these glands. So now correlated. हमने बात की थी microvilli की in the digestive system. All right. See the tall columnar cells. See the nucleus present over here, the connective tissue below the basement membrane, and these are the microvilli. So lining of the intestine, gallbladder, gastric glands, stomach and intestinal glands, इसका location होगा where it will be present. Now ciliated epithelium. अगर ये tall columnar cells पे छोटे छोटे hair like projections लगा दिए, so it is called ciliated epithelium. See the difference in the drawing of the diagram between the cilia and the microvilli. Microvilli को मैं नीचे जाके draw कर रही थी. Cilia will be the extensions from the apical surface. They will be thin, they will be hair-like extensions, they will be long, which will help in the movement of the fluid. जैसे respiration में हम along with air some dust particles भी inhale करते हैं, तो वो move करेंगे इन dust particles को along a particular direction. देखो इधर, ये cilia को मैं याद रखती हूँ एक fork से. ओके, ये अंदर जो जा रहे हैं माइक्रोविलाई को भी एक फोक से याद रख सकते हैं या फिर सीलिया को भी एक फोक के डायग्राम से याद रख सकते हैं. द फोक विच यू यूज एट होम. तो ये जो सीलिया है, दे आर गोइंग टू बेंड एंड देन अगेन कम टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन. ये काम करते हैं किसी भी सब्सटेंस को मूव कराने में फास्ट. दीज हेयर लाइक प्रोजेक्शंस, दे मूव इट फास्टर. सो फ्री एंड्स शो हेयर लाइक सीलिया. They create a movement of material in contact in a specific direction. ये material जो उसके contact में आता है उसकी movement कराता है एक specific direction में, and thus they are able to prevent the entry of foreign particles in the trachea. They are able to push the ovum through the oviduct. All right. So these are the main functions which it does. It is seen in the respiratory systems, that is the trachea, the bronchioles. Seen in the nasal cavity, seen in the buccal cavity of frog, oviduct of the fallopian tube, sperm ducts में भी मिलेगा for the movement of sperms. You can see it in the ventricles of the brain and spinal cord, जहाँ पे ये movement करेगा cerebrospinal fluid की. Ventricles are fluid-filled cavities in the brain and spinal cord. So वो fluid को move कराना है, circulate कराना है complete brain में. It is going to be present here also. Now cilia versus microvilli. आपको याद रखना है microvilli मैंने आपको बताया we are going inside, surface area increase करनी है. Cilia will be hair-like projections coming out from the apical surface. This is also called brush border epithelium. Toothbrush को ऐसे पकड़ के देखना,
Okay, you will be able to see the indentations which are going inside. So compare करते हैं उनको microvilli से. It is also called brush border epithelium. These are the cuboidal cells showing the cilia and the microvilli. So you should remember the difference. एक काम करेगा better absorption में, surface area increase करेगा. Cilia काम करेंगे movement of materials में, movement of fluids में. Next is the glandular epithelium. अब ये columnar cells में, see the columnar epithelium. If I introduce or if I draw some glands which will be filled with fluids or their secretion, जैसे कि mucus, okay, or hormones in case of endocrine glands, so it becomes glandular epithelium. So glandular epithelium में secretory granules present रहेंगे. All right, and ये यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेल्युलर भी हो सकते हैं. यूनिसेल्युलर का एग्जांपल है गॉबलेट सेल्स ऑफ द इंटेस्टाइन, यू हैव सीन इन द डाइजेस्टिव सिस्टम. नाउ इफ दे हैव डक्ट, दे आर कॉल्ड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स. डक्ट मींस जहां से वो उनका सिक्रीशन निकलेगा, तो उनके पास एक डक्ट होनी चाहिए ये सिक्रीशन को बाहर छोड़ने के लिए एट अ पर्टिकुलर सरफेस. इफ दे डू नॉट हैव अ डक्ट, they are called endocrine glands. So exocrine glands pour their secretion at a specific site through that duct. इसके examples हैं salivary glands, sweat glands. Endocrine glands will release their secretions directly into the bloodstream. या इसका better word है, better term है, they will directly introduce their secretion in the external environment wherever they are present. यहाँ पे पूरा secretion आ जाएगा. Okay, in the fluid in which they are present, in the external environment where they are present, वहीं पे अपने secretions देते जाएंगे. Whereas exocrine glands are going to go through a duct and are going to release it at its target site. Okay, so this you have to remember about the endocrine gland and the exocrine gland. Sweat gland is an example of endocrine gland. The secretion is going to come out from here to this target site. ये यहाँ नहीं रिलीज होगा यहाँ पे. All right, it's going to go through that specific duct. So this you have to remember. अब अगर ये secretions हैं exocrine glands के, तो वो होंगे mucus, होंगे sweat, होगा milk from the mammary glands. If they are secretions from the endocrine glands, they can be enzymes and hormones. Okay, examples of endocrine glands will be the pituitary, the thyroid, the adrenals. That are the glands, endocrine glands in the body. So यहाँ पे दिखाया है फिर से endocrine gland जहाँ पे present है वहाँ भी अपना secretion दे रहा है और circulation में भी जा रहा है. ये simple diagrams बना लो आपके textbook में so that you remember ये endocrine gland है, exocrine gland particular duct से बाहर आएगा, वो ये area में अपना secretion नहीं छोड़ेगा. It's not going to give out anything over here. So this is the difference between endocrine and exocrine. Now, ये जो cells थे, they will have these secretory granules called the goblet cells. Okay, ये specialized feature है glandular epithelium का. It may or may not have microvilli or ciliated epithelium, और ये दोनों present हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, but glandular epithelium में ये goblet cells, ये secretory cells definitely present रहेंगे. See this goblet cells. After we do the staining, टिश्यू को कट करके उसको स्टेन करते हैं तो ये डायग्राम्स मिलते हैं. ये आप लोग करोगे हिस्टोलॉजी में in your MBBS. All right. So these are the hair-like cilia and these are the goblet cells. Appreciate the column-like tall cells. That is the columnar epithelium. Next is the sensory epithelial tissue. Sense organs कौन से होते हैं? Eyes, nose, ears, yes, tongue, the skin. जहां से आप सेंस करते हो, आप अभी देख रहे हो, your eyes are sensing it, you're hearing to me, your ears are sensing it. Okay, ये sensory epithelium ये sensations को लेता है sense organs से and पहुंचाता है brain तक, जहां पे ये input होता है, इसका processing होता है. See, they will have specialized neurosensory cells. ये columnar भी हो सकता है, cuboidal भी हो सकते हैं, but mostly columnar रहेंगे.
सेंसरी हेयर्स भी प्रेजेंट रहेंगे इसमें जो सेंसेशन को कैच करते हैं. They perceive external as well as internal stimuli and give it to the central nervous system or to the brain. So this is the sensory epithelium. इनका main feature होगा these neurosensory cells. Germinal epithelium will be the epithelium which will be available in the reproductive system only. ये रहेंगे जो haploid gametes बनाएंगे जो cells, they will be dividing meiotically and they will be present in the lining of seminiferous tubules and inner lining of ovary. So quickly revise, ये होगा thin flat cells, serrated margins, polygonal cells, squamous epithelium, cube-like cells where length is equal to breadth, the nucleus is centrally placed, cuboidal epithelium, columnar where length is greater than the breadth, nucleus is present at the base or towards the base. So this is columnar. इसके ऊपर cilia लगा दिया तो ciliated epithelium हो जाएगा. Glands बना दिए तो ये glandular epithelium हो जाएगा. All these are very simple diagrams which you can draw in your notebook or your textbook so that you understand them better. अब एक layer है तो simple when there is one layer of cells. When there are different layers or more layer of cells, ये हो जाएगा compound epithelium. ओके, सो सेल्स सब एक दूसरे के ऊपर रहेंगे. हैव यू सीन जब एक वॉल बनती है ब्रिक्स ज्वाइन करके, ऑलराइट, सो लैटरली भी सेल्स में सीमेंट डालना पड़ता है एंड बीच में डाल के ऊपर सीमेंटिंग होता है. दैट इज हाउ लेयर्स बनते हैं. सो कंपाउंड एपिथेलियम विल बी द वन विच विल हैव लेयर ऑफ सेल्स. एक लेयर के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा. दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस. Okay, example is stratified epithelium. Basal layer जो है वो उसमें nucleus present रहेगी. It will be the one which will be germinating new cells when these top layer cells are lost. जब भी friction होता है दो surfaces के बीच में as of skin, so the top epithelial layer is lost. So ये regenerate होता जाता है, all right. So basal layer is also called stratum germinatum या stratum basale. And ऊपर की लेयर को बोलते हैं stratum corneum because of the presence of corneocytes over here. Now how will you remember these layers? ये तो stratum basale है. First it is cuboidal over here. It goes on changing its shape into spinous things like this or polygonal things. तो इसको बोलेंगे stratum spinosum. Then it becomes stratum granulosum जहां अब न्यूक्लियस दिखना बंद हो जाएगी. Okay, then stratum lucidum and the topmost layer is the dead layer. It will not have anything except the. I'm going to remember these layer of cells with this sentence. Cell layers go south to the basement. So C is for corneum, L is for lucidum, G is for granulosum, S is for spinosum and B is for basale. As we go south, as we are going down, this will be the arrangement of the layers in this stratified epithelium which is found in the epidermis of skin. ये mostly skin में मिलता है. This is the commonest example where this dry dead layer is present, जो low, which goes on losing itself and new cell layers are formed from here. Okay, it is also seen in the buccal cavity. जब हम खाना खाते हैं अगेन फ्रिक्शन, एपिथेलियम में फ्रिक्शन हो रहा है, सो इट इज ऑल्सो सीन ओवर देयर. आईज में इट इज सीन इन द कॉर्निया. ओके, मैंने आपको क्यूबॉइडल एपिथेलियम में बताया था कि आइरिस और रेटिना में क्यूबॉइडल एपिथेलियम रहता है, बट यहाँ पे सिंपल क्यूबॉइडल रहता है. यहाँ पे कॉर्निया में दिस काइंड ऑफ एपिथेलियम इज प्रेजेंट, द स्ट्रैटिफाइड वन. दीज आर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इन रिलेशन टू द आई. इन द पार्ट्स ऑफ द आई कौन सा एपिथेलियम कहाँ रहेगा. It is also seen in the lining of pancreatic and salivary gland ducts and lining of the vagina. इसी का दूसरा type where there are more layer of cells is the transitional epithelium. Okay, transition means these cells can change from one shape to the other. They can extend so that inside fluid does not mix with the external environment. The commonest example is the urinary bladder. Okay, when there is an urge for urination, we can hold it. The urine does not mix with the external environment because ये transitional epithelium stretch होता है. Okay, it is a stratified epithelium. Cells can undergo a change in their shape
and structure depending on the degree of stretch. जितना volume अंदर रहेगा उतना degree of stretch होगा. This type of epithelium is the transitional epithelium. Now pseudo-stratified. Pseudo means false and stratified means बहुत सारी layers. ये तो हमने देखा ही है stratified epithelium क्या होता है. Now pseudo-stratified means it is just giving a false appearance of stratification. See these columnar cells. They are giving a false appearance of being stratified, but ये है single layer ही. So you have to remember the pseudo-stratified columnar epithelium. ये देखो single layer of columnar cells हैं. Cilia may be present, may be absent. Goblet cells अगर glandular epithelium के हैं ये columnar cells तो present रहेंगे. But ये appearance जो है, it is a pseudo-stratified one. Now, we have seen the different kind of epitheliums and हमने याद किया है कि कौन से organ में कौन सा epithelium रहेगा. We can do it the reverse way also. जब हम एक एक organ पढ़ेंगे, तब हम उसके epitheliums पढ़ेंगे. So you need not worry if you cannot remember all the locations of a particular epithelium right now. When we will be doing human physiology in detail, we will be studying all these organs in detail. हम देखेंगे उनमें कौन से epitheliums present हैं. That is how in the end of human physiology आपको पूरा समझेगा कि कौन सा epithelium कहाँ present है and उसका function क्या है. Now these cells, they are very tightly and compactly packed with each other. Okay, इसमें तीन टाइप के junctions आपको याद रखने हैं. One is the tight. It helps to stop substances from leaking out of the cell. Tight means वो tight रहेगा, किसी भी चीज को आने जाने नहीं देगा between the cells. I have written this tight with red means to stop. Adhering means performing cementing to keep the neighboring cells together. जैसे हम bricks को adhere करते हैं बीच की cementing layer डाल के layer एक wall बनाने के लिए, वैसे ही adhering junctions रहेंगे. Third is the gap junctions. These gap junctions facilitate the cells to communicate with each other by connecting the cytoplasm of adjoining cells. Okay, and इसमें ions, small molecules and sometimes even big molecules are transferred. So gap junction, green means go, they allow them to go. So you have to remember this tight, adhering and gap junctions again for very important MCQs which come on these. So let us revise and summarize. Epithelium we have divided on the basis of shape into squamous, cuboidal and columnar. ये डायग्राम आपको मेरे साथ बनाना है. सिर्फ बनाना इम्पोर्टेंट नहीं है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको समझ रहा है कि नहीं. ऑल दीज टर्म्स यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड नाउ. वी हैव डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ their special features into ciliated, glandular and sensory epithelium. On the basis of number of layers, we have divided it into simple and compound, which can again be stratified and transitional epithelium. So ये आपको बनाना है आपके notebook में. When you are drawing it, you have to see that you understand all these terms. All right. I will get back to you with the revision of connective tissue, which is the next type of tissue which we will see in the body.